Our today's class is for class 12th. As you know, our subject is geology, and we are today going to discuss the topic faults. We have discussed the faults in the previous classes, which were related to the folding of rock stratas. So, faulting is also related to the different types of rock formations which get fractures, cracks due to tensional or compressional forces. So, what are faults? Fault may be defined as a fracture. When you see in a rock formation, when it gets fractured, or we can say it is break down, or it has been one part of it has been displaced, or in other words we can say fault may be defined as a fracture or crack along which blocks of rock have been displaced relative to each other. So, this block of rock, when it gets fractured or a crack happens in this rock formation, rock strata, what happens? The displacement of rock bed have been taken place relative to each other. In other words, we can say this part which left behind our foot is known as footwall, and the part which is get displaced from this footwall part which get displaced is known as hanging wall. These things, these faults result from the tensional as well as compressional forces, either which are inside the earth surface or on the earth, outside the earth surface. These forces make fractures or changes or displacements in the rock beds. So the entire process of development of fractures and displacement of blocks against each other is known as faulting or termed as faulting. It is a simple. So when faulting happens, what happens there? The footwall which are under our foot, the wall which is under our foot always remains at that particular place, but the part of a rock strata gets displaced. Either it goes in a downward position or it goes into an upward position due to internal forces. The internal forces pressure pushes it up, means this hanging wall sometimes moves above this footwall. But in this example or in this figure, we have shown that this hanging wall moves downwards. So there are some parts which have we also learned in the previous 11th class, parts of fault. So this inclined line along which the displacement takes place, or the line along which the displacement takes place, where part of the rock strata moves towards downward side is known as hanging wall, and the part which remains at the behind at the original place known as footwall, and the line which joins this footwall and hanging wall, in which is that line which makes the contact of these two, or in other words, which is the inclined line, that is known as fault plane. Head is an angle which is made between this fault plane and any vertical plane. This fault plane makes an angle. This fault plane makes an angle with any vertical plane. That angle is known as head angle. And the horizontal displacement of the hanging wall with respect to footwall, this horizontal display, how much the hanging wall have been displaced from the footwall, that can be shown here. This point and this point to be noted. This is a horizontal distance. This horizontal distance that of displacement
is known as heave. So also the vertical displacement of the footwall and hanging wall is known as throat. So these are the parts of which we have already learned in a previous class, class 11th, what is faulting and what are the different parts. Here we have to only discuss what are faults, what are the types of faulting, what are the different types of faulting. So in this class we will try to understand faults. If we try to understand in a way, ये जो फॉल्ट्स होते हैं क्या होते हैं, फॉल्ट इस तरह से भी हम डिफाइन करेंगे कि ये फ्रैक्चर्स या क्रैक्स अलोंग रॉक फॉर्मेशंस या रॉक सिंपली जो होते हैं उनके दौरान जो क्रैक जो इन बिटवीन रॉक्स के बीच में जो क्रैक्स हो जाते हैं या फ्रैक्चर्स हो जाते हैं, उन फ्रैक्चर्स या क्रैक्स को हम फॉल्टिंग कहते हैं। जिन क्रैक्स या फ्रैक्चर्स की वजह से ब्लॉक्स ऑफ रॉक्स जो होते हैं वो डिस्प्लेस हो जाते हैं विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर। जब ये फॉर एग्जांपल अगर ये फुटबॉल है, इससे ये दूरी पे डिस्प्लेस हो जाता है बाकी पार्ट, इसको देख के कितनी डिस्प्लेसमेंट इसने ले ली है, इसके साथ रिलेट करके कि इससे कितना दूर चला गया है, कितनी डिस्प्लेसमेंट हो चुकी है, कितना क्रैक हो गया है, कितनी दूरी हो गई है, उसको हम फॉल्टिंग कहते हैं। फॉल्टिंग कैसे हो जाती है, ये हमेशा ड्यू टू द रिजल्ट ऑफ नतीजा होता है किन चीज़ों का, टेंशनल या कंप्रेशनल फोर्सेस जो होते हैं उनकी वजह से रॉक फॉल्टिंग टेक प्लेस हो जाती है, रॉक फॉल्टिंग वाक़ा हो जाती है। जो एंटायर प्रोसेस है जिसमें डेवलपमेंट ऑफ क्रैक्स या डिस्प्लेसमेंट हो जाते हैं अलोंग रॉक ब्लॉक्स ऑफ रॉक्स जब जिनको हम कहेंगे, उसी टर्म को हम फॉल्टिंग कहते हैं। सो सिंपल सा प्रोसीजर है, सिंपल प्रोसेस है। जब किसी रॉक फॉर्मेशन में क्रैक या फ्रैक्चर हो जाता है, जो ये वॉल होता है ये अपनी जगह रहते हैं, इसको हम फुटवॉल कहते हैं, और जो बाकी दूसरा वॉल नीचे चला जाता है या ऊपर, अगर नीचे गया तो इसको हैंगिंग वॉल कहते हैं, ऊपर भी जाएगा तो भी हैंगिंग वॉल, अगर नीचे चला गया तो इसको नॉर्मल फॉल्ट कहते हैं, अगर ऊपर चला गया ये हैंगिंग वॉल तो उसको हम रिवर्स फॉल्ट बताते हैं। फुट वॉल अपनी जगह रहता है और फ्रैक्चर की वजह से ये जो पार्ट ऑफ जो रॉक स्ट्रेटा है नीचे चला जाए उसको हम हैंगिंग वॉल कहते हैं। इसकी वजह से कुछ फीचर्स बन जाते हैं, इसमें फीचर्स जैसे ये लाइन बन जाती है जो हैंगिंग वॉल और फुट वॉल के रिलेट फ्रैक्चर के दौरान जो लाइन खींची जाती है उसको फॉल्ट प्लान कहते हैं। Fault plane makes an angle with any of the vertical plane, that angle is known as head angle। और उसी एंगल को हम जो फॉल्ट प्लेन किसी भी वर्टिकल प्लेन के साथ एंगल बनाता है उसको हम हेड एंगल कहते हैं। इसी तरह फुटवॉल के निचले हिस्से से अगर हम डिस्टेंस माप लेंगे हैंगिंग वॉल के निचले हिस्से तक, जो ये रॉक बेड का हिस्सा था, लास्ट बॉर्डर जो थी इसी की, इस लास्ट बॉर्डर तक जो इसकी ओरिजिनल पोजीशन इससे पहले थी, जो कितना दूर चला गया है वर्टिकली उसको हम थ्रू कहते हैं। इसी तरह से हॉरिजॉन्टली ये बेड इस बेड से कितना, क्योंकि जब ये ओरिजिनल बेड जब मिला हुआ था तो अपनी जगह था, अब जब ये दूर हो गया है ये पॉइंट लास्ट वाला पॉइंट इस बेड का, फॉर एग्जांपल ये शेल का एक बेड है यहाँ पे और ये शेल बेड, इस शेल बेड यहाँ नीचे चला गया है इस हैंगिंग वॉल में, और हैंगिंग वॉल का शेल का ये लास्ट वाला बेड फुटवॉल के बेड से कितना दूर चला गया है शेल के सेम रॉक्स के बेड से, तो उस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को हम हीव कहते हैं, HEAVE हीव कहते हैं। जो तीन टर्म्स है यहाँ पे, वर्टिकल डिस्टेंस को थ्रो, हॉरिजॉन्टल को हीव और एंगल को हेड कहते हैं। इस पार्ट के जो अपनी जगह रहता है रॉक डिस्प्लेसमेंट रॉक स्ट्रेटा का उसको फुटवॉल कहते हैं, जो दूर चला गया चाहे नीचे गया हो या ऊपर गया हो उसको हम हैंगिंग वॉल कहते हैं, और जो ये एक इंक्लाइनेड सी लाइन होती है इसको हम फॉल्ट प्लेन कहते हैं। सो दिस वाज regarding the introduction regarding the faults, what are faults, how faults are happened, what are the different parts of faults.